Assalamu alaikum, my dear students of 5th standard. You know that we are discussing the U2 syllabus of your science textbook. That's the chapter number 9, Light and Shadows. And if you remember my previous video lecture, in that lecture I gave you the concept of light, its different sources, that's the natural sources and artificial sources. We also classified different objects into two categories, that's the luminous objects and non-luminous objects. Okay, luminous objects are those which emit light like bulb, sun, torch, etc., while non-luminous objects are those which do not emit light like vessel, tree, dice, etc. Okay, तो उस दिन मैंने आपको ये एक्टिविटी जो इस पे बुक वर्क है ये कंप्लीट करने को कहा था. होप यू हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टास्क ऑन पेज नंबर 116. टुडे we will study some more aspects of light here on page number 118. So I request all of you to open your science textbook on page number 118, where the topic, that's the transparent, translucent and opaque materials is given. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में हैं जिनको हमने इन टोटलिटी 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है. सो मटीरियल्स आर ऑब्जेक्ट्स, आप मटीरियल्स बोलो या ऑब्जेक्ट्स, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक मटीरियल्स. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन में हमने कौन सा क्राइटेरिया लिया है? लाइट. ओके, this is the topic which is related with the concept of light because we are dealing with the chapter light and shadows. तो ये वाला जो topic है it's also related with light. तो पहली कैटेगरी जो है ट्रांसपेरेंट. ठीक है, यहाँ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. तो ट्रांसपेरेंट is a very common term. You come across with this term in your day-to-day life. You know, transparent objects are also called as see-through objects. For example, here I have highlighted the examples like clear glass, clean water, glass bottle, etc. Now let us study the definition of these transparent objects here given on your book. Materials that allow all the light to pass through them are called as transparent materials. वो वाली चीज़ें जिनके थ्रू पूरी लाइट जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स बोलते हैं. लेट्स रिपीट वंस अगेन. मटीरियल्स दैट अलो ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. Examples are here highlighted. That's the clean water, the clear glass and the glass bottle. For example, here I have a transparent glass. This is transparent because you can clearly see what is inside this glass. There are 2 objects, one is pink color and one is lemon color. ठीक है, even if you cover the topmost portion of this glass, still you will be able to see what is there inside the glass because जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, किसी चीज़ को देखने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइज़ एंड लाइट. तो आइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नॉर्मल है, तो लाइट यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो लाइट पूरी इस ग्लास के अंदर जाके हम ये ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट ग्लास. सम मोर एग्जांपल्स आर ग्लास बॉटल एज इज़ हेयर गिवन इन योर बुक. दिस ग्लास बॉटल, तो इसमें मिल्क है. यू आर एबल टू सी दैट इनसाइड दिस ग्लास बॉटल इज़ मिल्क because this is transparent bottle because it allows all the light to pass into it. Now it's the clean water. अगर आप कभी वाटर बॉडी के नज़दीक गए होंगे, शैलो वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स और लेक्स, तो उनके बॉटम में कुछ स्टोन्स होती, छोटी छोटी स्टोन्स और इंसेक्ट्स होते हैं. तो वो हम क्यों देख पाते हैं? बिकॉज द वाटर देयर इज़ क्लियर, that's clean. Okay, that's transparent water. So that very water allows you to see the bottom, composition of that very water body. water body में क्या है, इसके bottom में क्या है, stones है, insects है, कुछ और चीज़ें हैं. तो वो आप किसकी वजह से देख पाते हो? because the water there is clean and that very clean water allows the light to pass through it. So these are the examples of transparent objects like the clear glass, clean water, glass bottle. Even if you take the examples of your windows में जो शीशे लगे होते हैं, they are also transparent in most of the cases, ताकि वहाँ से light अंदर आए तो रूम उससे इल्यूमिनेट हो जाए. ठीक है, नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ दीज मटीरियल्स is
translucent materials. Translucent materials are those materials which allow only a half portion of light to pass through them. Okay, for example, paper sheets, any sheet, for example the sheet of this book, it's also translucent because it allows light, partial amount of light to pass through it. Then colored glass, frosted glass, आजकल आप देख रहे हो कि विंडोज़ में कलर्ड ग्लासेस लगे होते हैं, या फ्रॉस्टेड ग्लास इज दैट वेरी ग्लास जो धुंधला होता है, धुंधला टाइप ऑफ ग्लास, which allows only a partial amount of light to pass through it. So these are the examples of translucent objects. Now let us repeat what are translucent objects. Translucent objects are those objects which allow only a partial amount of light to pass through them. ये वाले objects पूरी light means 100% light pass करते हैं, ठीक है. Translucent objects say they pass 50% of light through them. For example, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा pot लिया है, ठीक है, ये डिब्बा. तो इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ पिंकिश कलर्ड या कोई और स्ट्रक्चर इसमें डालने की कोशिश करूँगी यहाँ पे, ठीक है, तो देन आई विल कवर इट्स लिड हेयर. तो आपको दिखेगा कि इस वाले डिब्बे में कुछ है, पिंकिश कलर स्ट्रक्चर है, बट यू विल नॉट बी एबल टू completely discover what is inside it unless you open its lid. So this is a translucent object and it allows only a partial amount of light to pass through it. Okay, this is translucent. Now third category, that's the opaque objects. Opaque objects block total amount of light. They don't allow any portion of light to pass through them. ठीक है, ये कुछ भी 1% भी light pass नहीं होने देते हैं. For example, steel glass, brick wall, wood. ये इसकी example, यहाँ पे मैंने steel glass लिया है, ठीक है. अगर मैं इसमें कुछ डालूंगी and I will block its topmost portion, तो you will not be able to see what is inside this glass. Okay, this is opaque object unless you look through the topmost portion of this glass. So steel glass is opaque. This very product, it's translucent, and this transparent, and this glass, it's transparent, translucent and opaque. So these are the three different categories of objects classified on the basis of how much light they allow to pass. Transparent objects allow 100% of light to pass through them, so we are able to see clearly through transparent objects. For example, अगर कभी clear glass होता है तो हम अच्छे से देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या है. तो translucent objects वो वाले objects होते हैं जो कुछ ही light allow करते हैं, ठीक है, तो हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं उनके through, but still they allow only a little portion of light to pass through them. And then third category, that's the opaque objects. They don't allow any portion of light to pass through them. यहाँ पे मैंने steel glass की example दी. तो brick wall, you will not be able to see anything through the brick wall, or wood. Those are all the opaque objects. So this was all about in today's lecture. Hope you have enjoyed this lecture. If you find any difficulty in this lecture, you can definitely text me on my number. Thank you.